என்ன பண்ணிட்டுருங்க அக்கா? பஜ்ஜியா? ஓ சூப்பர்! தமிழ்நாடு பஜ்ஜி, hot and crispy with some tea. वाह वाह महादेव! को जब देखता हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है अंदर से. Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls. This is Philly on William Arvind. I'm so happy to be riding once again. आज है 8 मार्च 2024, 8 मार्च 2024 एंड यू नो इट इज़ अ महाशिवरात्रि डे. एंड जिन्होंने अभी इंट्रो वीडियो देखा है तो आई एम श्योर दे हैव रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू ईशा योगा सेंटर एंड राइट अंडर द आइज ऑफ आदियोगी. आज का प्लान बस बहुत सिंपल है. इट्स अ स्पिरिचुअल राइड. हम बहुत सारे राइड करते हैं, एडवेंचर, ऑफ रोड, दिस दैट, टूरिंग फैमिली के साथ, लेकिन हमने कभी ऐसी राइड्स की हैं जो हम अपने बनाने वाले लोग, द क्रिएटर्स, डू वी एवर राइड सो दैट वी गो एंड मीट देम? डू वी राइड टू गो टू टेम्पल्स और चर्चेस और मॉस्क और व्हाटएवर, समथिंग विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम आवर हाउस? लेकिन आज का राइड यही है. आई एम गोइंग ऑल द वे देयर. प्लान टू बी स्टेइंग अवेक एंटायर नाइट. So this video is now split into two parts. The first part will be till 12 in the night-ish, so that I get to experience whatever I can see till then. Those things I'm going to share with you. And the second part will be from 12 in the night till the time I get away from Isha Yoga Center, come back home. So what are the experiences I felt there? That's how I'm going to split this vlog so that I can share maximum experience. Oh, that's an AI camera and I'm speeding in front of it. Hopefully I don't get a ticket for that. That is the fun part of riding in Kerala. There are so many speed cams looking at you. Welcome back, and we're starting the ride now. I got the gloves on today. How much is the distance? Okay, it's kind of 215 kilometers out, 4 hours 15 minutes. Time is around 1:30 now, so I think I'd better be heading out fast, otherwise I'll be missing the event at 6. So got all my gears on and time to take the name of my god, Shambho Mahadeva. Time to pull out this vehicle. See, this is where my parking lot is, by the way. And जैसे मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे ऑलमोस्ट इमीडिएटली एसोसिएशन वालों ने एक पार्किंग लॉट दे दिया था. बाद में पता चला कि जो पार्किंग लॉट है यहाँ पे कचरा रखने वाले थे. सामने कचरा दिख ही रहा होगा. अब ना 8 लाख की गाड़ी कचरे के बीच में खड़ी रहती है. क्या बोले, ऐसी नौबत आ गई आजकल. चलो जो भी हो, अभी निकलते हैं. एंड इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस आउट एंड द समर इज रियली रियली हार्ड इन कोचिन दीज डेज. लुक एट द धूप हियर. इतनी तेज़ धूप है ना कि मतलब हड्डी तक जल जाती है. एंड दैट्स वेयर द पेन ऑफ राइडिंग इन दीज कंडीशंस आर. एंड यू नो, दिस इज द मोस्ट फियर्ड स्पॉट फॉर मी नाउ. एक बार 2-3 बार बसते बसते निकल गया. जस्ट लॉट ऑफ ट्रैफिक इन दिस रोड. शायद छुट्टी का दिन है ना, इसीलिए आज कोई दिख नहीं रहा. चलो बड़े प्यार से आराम से इस गाड़ी को ना हल्का हल्का निकालता हूँ. कुछ पता नहीं. उप्स, देखा देखा देखा, यही तो है प्रॉब्लम. ना हॉर्न ना लाइट, साला कुछ नहीं, और सीधा सामने आगे टपक जाते हैं लोग. यही नहीं, बस ये बड़े बड़े ट्रक, छोटे छोटे साइकिल वाले, ये सब बड़ा प्रॉब्लम है. इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लाइंड जोन एंड आई फाइंड इट रियली रियली annoying to be coming out of an apartment complex these days. I need some external assistance. मैं सिक्योरिटी वाले को बोलता हूँ आ जाओ, खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दिखाओ. चलो देवी मंदिर को क्रॉस कर रहे हैं एंड आई थिंक आई पे माई रेस्पेक्ट्स टू हर. आई प्रे दैट आई हैव अ सेफ एंड easy ride. Nothing interesting comes my way. So the highway is so open, it's empty, it is so khali. देख रहे हो आप चारों तरफ से ना, आई डोंट हैव एनी ट्रैफिक अराउंड मी. And this is actually kind of once in a blue moon event. We generally get on this highway, National Highway 544 from Cochin to Coimbatore. This highway is generally full of traffic. Even on the sidewalks or on the the service roads, there are so much of vehicle ready to pounce out of such openings. It's actually a very difficult road to ride on. And I just cleared Alua town. Now the Alua is one of the famous place when it comes to Shiva Puja, because there is an ancient temple here called as the Manapuram, Alua Manapuram, and that's also going to be a congregation point जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं फॉर महाशिवरात्रि. बहुत सिंपल है. आज रात को सोना नहीं है. कितना इजी है बोलना, लेकिन काम है कठिन. और आज करेंगे हम थोड़ा मेडिटेशन, पूजा. विल हियर टू सद्गुरुज वाइज वर्ड्स
एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू शूट एनी ऑफ दैट बिकॉज अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर दे कैन गो टू यूट्यूब। उनका पूरा 12 घंटे का ये जो इवेंट है जो शाम को 6 बजे वैसे स्टार्ट होने वाली है, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आई विल गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियो देयर देन ऑन माई डिवाइसेस। So that's the plan. I'm going to show my experiences. At the end of the whole event, I'm going to share which is the good thing which I learned, or rather what I learned, and what are the good things of this journey, and also what are the good things or the bad things of not this journey. Did I mess it up? Oh yeah. Okay. Once again, what are the good things I learned in this journey? What I'm going to put into practice in my life? और ऐसा क्या क्या एक्सपीरियंस था, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा आज के रात में, जो मैं शायद उम्मीद करूँगा कि मतलब ये चीज़ें बदल जाए और लोग सुधर जाएं या लोग ये सब ना करें. सो आई एम गोइंग टू लुकिंग इन टू दीज टू एस्पेक्ट्स. माइंड इज़ अ स्पिरिचुअल एंडेवर. मैं सोच रहा हूँ स्पिरिचुअल बनने का, लेकिन आई विल ऑल्सो हैव माई प्रैक्टिकल हैट्स ऑन. सो आई विल ऑल्सो एनालाइज द सिचुएशन अ बिट. And end of the day, it's all spiritual. I'm going to be immersed, and my footage is going to be generally less now. So it's all generally my ride on the other side. So crossed Angamali town, I think, and now that I'm getting a bit of traffic, but fine. So what I'll do, I hope this ride remains uneventful. ना कोई पंचर, ना कोई something anywhere ahead, and जल्दी से जल्दी महादेव के चरणों में पहुंच जाऊं. और उम्मीद करता हूँ कि मतलब आज का रात एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत ही बेहतरीन रात निकले मेरे लिए. एंड इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं. एंड लेट्स भाई ओ भाई क्या देखने को मिला. एक नंबर का तगड़ा एक्सीडेंट आंखों के सामने हुआ. अभी सामने वाली जो येलो ट्रक है, ट्रक ने टिपर लॉरी बोलते हम यहाँ पे, उसने मारा एक बढ़िया सा ठोका ये वाले वाइट वैगनर को. इसकी हालत देख रहे हो, अरे पेल दिया. शायद ना ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था. एक लाइट सिग्नल है यहाँ पे ट्रैफिक का, और वहाँ से दोनों छूटे थे, और शायद ये ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, और ये अटक गया उसके लेफ़्ट साइड फेंडर में जाके लॉरी का. और फिर लॉरी ने इसको ऐसा घसीटा ना कुछ 100-200 मीटर. जब मैं भी ट्रैफिक के सिग्नल से निकल रहा था ना, मुझे ना बहुत बड़ी आवाज़ आ रही थी, स्क्रीचिंग वॉइस. मैं भी सोच रहा था एक ऐसी आवाज़ और कैसी आवाज़ है. देखा तो पता चला कि ये है. और कम वक्त मेरा उसी टाइम पे मैंने कैमरा ऑफ करके रखी थी, बस 2 मिनट पहले. भैया भी यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कैमरा ऑन थी, तो मैंने बोला भाई कैमरा ऑन नहीं थी. क्या बोलूँ, कैमरा छोड़ो, मेरा ऑडियो का कनेक्टर भी मैंने ऑन नहीं किया, और वॉइस ओवर देना पड़ रहा है इस सिचुएशन के बाद में. अब थोड़ा ना उसके उल्टा साइड ना लेफ़्ट साइड में देखता हूँ मैं. लेफ़्ट साइड एकदम ही क्लीन है, स्पॉटलेस है, देख रहे हो. यानी कि वो राइट साइड उसकी इसीलिए लगी है क्योंकि वो ओवरटेक कर रहा था लॉरी को लेफ़्ट साइड से. ये गलत बात है. यही सब है हमें ट्रैफिक और रूल्स के बारे में जो जानना. वी शुड नेवर ओवरटेक एनी अदर व्हीकल, स्पेशली हैवी व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड. मैं काफ़ी सारी सिचुएशन में बोला हूँ. ये भैया है ट्रक ड्राइवर, यही है वो ट्रक जो कल्प्रिट. इसी ने सारे कांड किए आज. पता नहीं इन दोनों के बीच में आगे क्या होगा. So boys, when you have a 6-lane highway like this, right? This is 3 lanes. So my I'll cover it in the next footage where I'll tell you where to ride and how to ride when you're on a 6-lane highway. And this is a classic example. Please do not drive like him. The reason if he has injured his vehicle on the right side, there's a specific logic to it, and I'm going to explain that logic. चलो अभी चलते हैं. So ladies and gentlemen, boys and girls, when you are on a 4-lane highway, which is generally the setup of every national highway in our countries, unless you go on a 6-lane highway or an expressway, 4-lane highway is something which you will frequently encounter, especially if you are touring and not a kind of an adventure junkie or off-roading guy. If you are a tourer, this is the highway you are going to face. So when you are on a 4-lane highway, which lane should you stick to? Now, if you are an average rider or a beginner rider, your speeds of transit is not going to be generally more than 70. You might try to do 80, 90, but the moment you see a big truck like this, you start coming down, braking and all that, and therefore you will disturb your momentum. Now, if you are on a fast highway, you got enough and more space to maneuver your motorcycle. So where do you want to be? Which is the most ideal position? Let's take for hypothetically you're on the left side of the highway where the gentleman in the motorcycle was going, or where this auto rickshaw is. You are on that edge of the left lane, and you are just slowly moving, or you're going at 70, and suddenly some guy just pops out, or he decides to bang himself to the left side. A truck decides to go further left. So what do?
Do you want to be on that side of the highway where you are in a situation of extreme unpredictability? No, I don't think you need to be there. Therefore, if you are planning to be riding at some good speeds above 80 kilometers, near 100, 120, 140 or something like that, depending on the traffic there, then where I am riding right now is the most ideal part of the highway to ride, which is this part. This is the outermost part of the inner lane. The inner lane in this condition is the right lane where I am in. It is close to the divider, it is adjacent to the divider, and I am maintaining on the extreme left of it towards the outer side. Now the flexibility this position offers is that if I suddenly find a vehicle on the right lane which is stopping or something, I can just place myself, I can just cross the dashed lines and go on to the other side and then again rejoin the highway. Else, if I was on the other side of the highway, there are far too many trucks and I'm going to keep breaking my momentum, coming around, slowing down and all that. So if you find yourself in a tricky situation as to where to go, remember this Mool mantra, keep sticking to the leftmost or the outermost part of the right lane and keep maintaining that. And always one way of doing it is when you are on that lane, your dashed line should continuously keep going in a straight line as much as possible in line with your left mirror. Okay, so which part of the left mirror? Where the left mirror is actually bending towards the left side, keep that dashed lines on that edge. So I hope am I making the point very clear here? So when you are shifting lanes, and sooner or later I'll just shift the lane and I'll just demonstrate my point to you. That's how you have to shift. Once you shift your lane, go to the right lane immediately as quickly as you can and stick to the left part of the right lane. Okay, so now I've entered the 6th lane highway. Where to maintain a 6th lane highway? Well, very clearly maintain the center of the center lane as much as you can. If required, you can just keep shuffling between the two left and the right part of the lane depending on the traffic you have. Now please do remember, in our highways generally what happens is that slow vehicles keep tending to keep further left. Okay, so the most dead slow vehicles are on the leftmost part of the 3 lanes. The center lane is taken by these big trucks and so on, and therefore you always need to generally overtake them on the right lane. Okay, if you find an empty stretch like I have found, keep yourself to the center of the center lane. You will remain generally safe. You want to overtake, jump over to the right lane, overtake the way I am doing it, and when you do it, estimate, okay, predict, anticipate much ahead, come into the right lane, look ahead, ensure that there is no further obstruction, there is no slow moving vehicle on the right lane itself. In India we have all weird kinds of drivers. Okay, so you be sure, because you are a tourer, you need to make good of your time. You are not standing on the road to just have a jaywalking there. You are not jay motoring. Okay, you are a tourer. You are supposed to be touring at a certain good speed. That's why you have to make good your ETA, and you are not just yet another average guy. Okay, so you are someone experienced. So that's how you maintain. If you see my footage fairly, I have maintained some 85 to 100 km/h speed range continuously for the last I don't know how many minutes, and I have not had any much issues. So whenever you are in doubt, always do. And a very important part also in this thing is never to overtake any vehicle on the left side. And even more if the vehicle is a large one, especially a truck, a bus or something like that. The problem is these guys have their mirrors somewhere high up. Okay, so they are expecting to see the overtaking vehicle big, or if it's a small vehicle, at a long distance behind them on the left side. Now what happens is that we are in the center lane or something like that, we immediately shift over to the left lane. If you are overtaking like the way I am doing, immediately shift it over to the left lane, and what happens, you tend to pass close to them. Now imagine the condition of that rider or the driver for that matter. He wouldn't be able to see you coming out of the lane behind him, which is his blind zone, suddenly overtaking him on the left side. He doesn't even have a second to look at you, before which you are already either there on his left side or you're overtaken him. So this is a very dangerous move to do. And even if you are doing it, give at least some 1.5 to 2 meter distance, so that if you pass and he is tending to drift slowly into the left side, then it doesn't happen very quickly, because a slight left turn when he is on his lane
can suddenly push onto your motorcycle and you may meet with a deadly accident like that car guy had. Okay, so please do remember, never overtake on the left side, but if the situation warrants that you have to overtake on the left side, minimum 1.5 to 2 meters, as much as possible maintain the distance, overtake him, again get back to the center lane. Okay, this is the mood mantra to be maintained and I hope that will keep you safe in all the rides. चलते चलते बातें करते करते पता नहीं चला कब केरला तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस हो गया। अब दोनों तरफ जब पॉलिटिकल पार्टीज का जो पोस्टर्स बदल जाते हैं ना, तो समझ लो कि आपका स्टेट बॉर्डर क्रॉस हो गया। और अब इतने सारे तमिल बेस्ड बिलबोर्ड्स मेरे को दिखने लग गए दोनों तरफ ना। अभी अजीब सा फीलिंग है ना, जब आप एक स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हो ना अपनी बाइक पे, अलग फीलिंग आती है। ये ना कैसे बताएं, जैसे चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद बाकी बातें करेंगे। என்ன பண்றீங்கக்கா? ஓ बज्जिया, सुपर सुपर तमिलनाडु बज्जी। मन तो कर रहा है खाने का, क्या करूं, इतना तेल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। चलो छोड़ो यार, कैसे। अच्छा भैया चाय लेके आ गए। औसम, अब हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद हमें जल्दी निकलना है ईशा, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। चाय के नाम पे ना एक जान भी अपनी हाजिर है। चलो चलो जल्दी जल्दी चाय पीते हैं और फिर निकल। टेक्निकली स्पीकिंग ना मैं अभी बहुत ही पास हूँ ईशा योगा सेंटर का, आई थिंक सम 7-8 किलोमीटर, लेकिन हर जगह पुलिस खड़े हैं। भैया पुलिस भैया से मैंने पूछा अभी कि क्या रास्ता है। भैया ने बोला सीधा आगे चलते जाओ और वहाँ पे एक राइट टर्न निकलेगा। और जितना योगा सेंटर के मैं अभी पास में हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि घुमाया जा रहा है, क्योंकि हर जगह नाकाबंदी है। तो भैया पुलिस भाई ने बोला कि अभी सम 5 किलोमीटर्स ही है, लेकिन मैप दिखा रहा है 7-8 किलोमीटर। चलो आगे चलता हूँ मैं, एंड होप आई विल बी देयर वेरी सून। गाड़ी का एक पार्किंग लोकेशन भी ढूंढना है, लोकेशन ढूंढ के मैं उसको पार्क करूँगा और मार्क करना पड़ेगा मैप में, वरना रात को या सुबह जब आऊँगा वापस तो मैं जगह भूल जाने वाला हूँ। बड़ी खूबसूरत सी एक विलेज रोड है ये, अप्रोचेस टुवर्ड्स ईशा योगा सेंटर। दैट्स अ यूनिक पार्ट, दोनों तरफ हरियाली है एंड आई कैन सी दी वेलियनगरी पहाड़ जो सबसे आगे है, उसी के फुट हिल्स पे ईशा योगा सेंटर है। चलो मिलते हैं ईशा योगा सेंटर में। अभी से फुटेज थोड़ा कम हो जाएगा, वैसे मेरी बैटरीज डाउन है। फाइनली हम पहुंच गए हैं महादेव के शरणों में, लेकिन थोड़ी सी एंट्री में प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करके बाद में करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें टाइम पे कहीं पे पहुंच जाना चाहिए, टाइम से पहले। मैं आया लेट और सारे एंट्रीज बंद हो गई और फाइनली मुझे बोला गया कि आप इस एंक्लोजर में चले जाओ, और मैं वहाँ आके बैठ गया। और मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि चीफ गेस्ट हैं वाइस प्रेसिडेंट, और जब तक उनका मूवमेंट 8:30 बजे तक नहीं हो पाएगा, और टाइम है 8:06, तो पता नहीं कब तक मैं जाके अंदर एनक्लोजर तक घुस पाऊँगा। तब तक कॉमनर्स बन के ये प्रोग्राम स्क्रीन में देख के एंजॉय करें। अब सोच रहा स्क्रीन में ही देखना था तो यूट्यूब में देख लिया होता। फाइनली एक वॉलंटियर भैया जिनका मैंने सहारा मांगा था, उन्होंने मुझे हेल्प कर दिया और मुझे थोड़ी सी बेटर एनक्लोजर की एंट्री मिल गई। अब मुझे जाना है आदियोगी, जो वहाँ दिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा, हाँ वो देखिए सेंटर में आदियोगी जी दिख रहे हैं, उसके से पीछे से होते हुए, आदियोगी के पीछे से होते हुए मुझे जाना है। तो उसके पहले भाई थोड़ा भोजन हो जाए, बड़ी भूख लग रही है, लंबी राइड भी हुई थी, कुछ खाया भी नहीं ढंग से। तो काम करता हूँ, खाता हूँ, फिर निकल पड़ते हैं। अन्नदानम काउंटर है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाके वीडियो शूट हो पाएगा, जिस तरह की भीड़ खड़ी है। तो कोशिश करूँगा कि खाना उठाऊँ और फिर वीडियो एक बना के देखते हैं इसकी। टाइम ऑन द वॉच, रात के 10:50 एंड फाइनली एक अन्नदानम काउंटर मिला, थैंक्स टू माय सीनियर जो यहाँ पे वॉलंटियरिंग वर्क कर रहे हैं। खाली है, हाँ जो पैसे वाला जो खाना है वो थोड़ा सा है क्राउडेड, थोड़ा सा, लेकिन अन्नदानम वाला काउंटर एकदम ही खाली है। चलो लंगर खाते और ऐश काटते हैं आज के दिन। फाइनली अन्नदानम मिल गया, सांभर राइस और पोंगल, और बढ़िया खाना है, दोनों खा लिया मैंने। और आदियोगी के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ विदाई हो जाते हैं। अभी 12 बजे के नेक्स्ट फुटेज के साथ मैं पार्ट 2 ऑफ द व्लॉग बनाने वाला हूँ।
और जब भी मैं महादेव को ऐसे देखता हूँ ना, अंदर ही अंदर ना बड़ी अजीब सी एक फीलिंग होती है, खूबसूरत सी एक फीलिंग है। क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ। गुड नाइट।